Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we are doing three-dimensional geometry and the chapter, the cone, Sanko. Till date, we have defined the cone, how to find the equation of the cone, and the plane section of the cone. Yesterday I explained when the plane intersects the cone and plane cuts the cone, then the section obtained may be pair of lines, maybe circle, maybe ellipse, maybe parabola, or maybe hyperbola. So cone, then conic, that means conic section. Sometimes conic section is known as plane section. समतल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। जब किसी शंकु को समतल से कट करते हैं, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, जब किसी शंकु को किसी समतल से कट करते हैं, उसको काटा जाता है, तो या तो पेयर ऑफ लाइंस मिलती है या फिर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला मिलता है। कल मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताया था। So if a plane cuts the cone, then the section is obtained, that the section is called conic or conic section, since the equation of the cone is second degree। जो हम यहाँ पर शंकु के इक्वेशन ले रहे हैं वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो प्लेन जब कट करेगा और जो सेकंड सेक्शन मिलेगा हमें, तो प्लेन सेक्शन मिलेगा कट करने के बाद, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी कोनिक की। इन सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द कोनिक आई हैव already explained, maybe pair of lines, maybe circle, ellipse, hyperbola और parabola। इसको यदि आपको रिवाइज करना हो तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के मेरे जो वीडियोस है, शुरू वाले वीडियोस आप उनको ध्यान से देखिएगा। इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है एक्सवाई प्लेन के अंदर सर्कल कब बनता है, पैराबोला कब बनता है, एलिप्स कब बनता है, हाइपरबोला कब बनता है और पेयर ऑफ लाइंस क्या बनती है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। There are three questions I have written, but the meaning be the same। तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, उनका अर्थ जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ट्विस्टिंग है थोड़ी सी। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विथ द कोन। जो लाइंस मिल रही है वो किससे मिल रही है? प्लेन को इस शंकु से इस कोन को कट करने के बाद। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x + y + 5z = 0 with the cone 6yz - 2zx + 5xy = 0 means these are the lines। This angle we have to obtain। This is the vertex 6 lines। प्लेन को कट करने के बाद ध्यान रखना, कल मैंने बताया था जब समतल उसको मैं शीर्ष से निकालता हूं ऐसे वर्टिकल, तो ये दो लाइंस बनती हैं। और ध्यान रखना है ये जो दोनों लाइन हैं वो इस समतल में भी है, वो जो बाउंड्री बन रही है वो समतल में भी है और कोन के अंदर ही है। इसलिए ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? ये जनरेटर भी कहलाएगी। बी केयरफुल, ये लाइन क्या कहलाएगी? जनरेटर। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन द जनरेटर्स। क्या बोला मैंने? फाइंड द एंगल बिटवीन द generators in which the plane cuts the cone। यहां मैंने लिखा find the angle between the lines, लेकिन यहां जो है लाइन का नाम मैंने बदल दिया क्योंकि स्पेशल लाइन है, वो शंकु के अंदर है, वो शंकु की सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं होगा, उसकी सरफेस पे है, क्योंकि उसको समतल से जब शंकु को कट किया जाता है, जब वो वर्टेक्स से पास होता है, तो जो लाइंस बनती है वो लाइंस जनरेटर्स ही होगी। इसलिए यहां जो दो जनरेटर्स है
उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। उस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। सपोज दिस एंगल इज थीटा। सेकंड, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस इन विच द प्लेन कट्स द कोन। इक्वेशन मैंने सेम लिखा है, लेकिन लिखा है फाइंड द इक्वेशन टू द लाइंस। रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जब समतल को शंकु से कट करवाया जाता है। लाइंस इन विच द प्लेन कट्स द कोन, जब समतल शंकु को प्रतिच्छेद करता है, उसको काटता है, तो जो लाइंस मिलती है उन लाइंस की इक्वेशंस कैलकुलेट करना। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का कोण भी ज्ञात करना है। आपको मालूम होना चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, द फॉर्मूला cos theta equals L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, where L1 M1 N1 are direction cosines of the first line and L2 M2 N2 be the direction cosines of the second line. If direction ratios are given, दिक्नुपात दे रखा हो, तो cos theta का फॉर्मूला A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, आपको मालूम होगा, मैंने बताया था। इसलिए तीनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज उसका थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो चाहे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस बोले या फाइंड द एंगल बिटवीन जनरेटर्स बोले, बात एक ही है। लेकिन वो लाइंस और जो जनरेटर्स आपको मिलने वाला है वो कैसे मिलेंगे, जब शंकु को समतल से काटा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो समतल है वो शंकु के शीर्ष से निकलना चाहिए, तभी लाइंस बनेगी, नहीं तो लाइंस नहीं बनेगी। 3x plus y plus 5z equals to 0 कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट इज एब्सेंट, सो दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ द कोन होमोजेनियस, ध्यान रखना, सेकंड डिग्री टर्म सेकंड डिग्री टर्म सेकंड डिग्री टर्म। सो दिस इज द इक्वेशन in x y z but it is homogeneous। यदि homogeneous इक्वेशन है तो उसका जो शीर्ष है शंकु का वो मूल बिंदु होता है 0, 0, 0। इसलिए यहां पर जो ये वर्टेक्स मिलेगा दैट इज 0 0 0। एंगल कैलकुलेट करना मींस लाइंस जो है वो मिलेगी, और लाइंस की इक्वेशन जो है वो आप सपोज कर सकते हो जनरेटर की इक्वेशन, जैसे आपने जनरेटर को सपोज किया था। कब सपोज किया था, जब हमने कोण की इक्वेशन कैलकुलेट की थी। वर्टेक्स यदि 1 2 3 था तो हमने लिखा था x - 1 upon L, y - 2 upon n, z - 3 upon n। यहाँ पर वर्टेक्स 0, 0, 0। ध्यान रखना, वर्टेक्स दे नहीं रखा, आपका भेजा, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क काम करना चाहिए कि कोण की इक्वेशन होमोजेनियस है, इसलिए इसका वर्टेक्स, इसका जो शीर्ष है वो 0, 0, 0 और समतल 100% उस वर्टेक्स से निकलेगा, जैसा मैंने कल बताया था, तभी दो लाइंस बनेगी, और 0, 0, 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है। सो इक्वेशन ऑफ द जनरेटर, राइट, इट इज x - 0 upon L, y - 0 upon m, z - 0 upon m। This is the generator। Okay, now any point on the generator you can consider by taking k, so it will be lk, mk and nk. These two lines are in the plane as well as in the cone, so the point will be satisfied by these two equations. Okay, so I write it. Now we solve this question comfortably। मैंने समझा दिया है कि करना क्या है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से एनालाइज करके उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना। The vertex,
lines of intersection. Lines of intersection in which the plane 3x plus y plus 5z equals to 0 cuts the cone 6yz minus 2zx plus 5xy equals to 0. Let theta be the angle between these two lines. Okay, so here this angle is theta. Lines of intersection in which the plane cuts the cone. So these lines are nothing. Generators of plane. So find the angle between the generators. Let the equation be, let the generator on line of intersection. जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते। B x minus 0 is any point on this? This B L K M K A point होगा. Let us suppose this. See. This point will be satisfied by the plane as well as the cone. आपको ध्यान है कल मैंने बाउंड्री बताई थी, उस बाउंड्री के ऊपर जब मैंने खीरे को कट किया था तो जो ग्रीन कलर की बाउंड्री थी और जो क्रीम कलर का प्लेन था वो बाउंड्री कर्व्ड सरफेस को और प्लेन सरफेस दोनों को वो सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से जो यहाँ लाइन बनी है वो लाइन प्लेन में भी रहेगी और वो लाइन कोन के सरफेस पर भी उसका जनरेटर का भी काम करेगा। ये वाला लाइन है, इसलिए लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप वर्टेक्स देख लो, वर्टेक्स इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं k को 0 लिखता हूं तो इट इज 0,0,0, लेकिन k के बहुत सारे दूसरे मान भी होंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सो एनी पॉइंट ऑन दिस विद दिस, सो फॉर सम वैल्यू ऑफ k, some value of k, Lk, Mk, Nk will be on 3x plus y plus 5z equals to 0 and 6yz minus 2zx. Therefore, 3l plus m plus 5n equals to 0 and 6yz. So yz will be m minus 2nl plus 5ln equals to 0. L means Lk, Mk, Nk, k is common, then either this equals to 0 or this equals to 0, so k is eliminated, k गायब हो जाएगा। यहाँ से जब आप रखोगे इसके अंदर तो k स्क्वायर होगा, यहाँ पे k स्क्वायर is common and it is eliminated, so we find these two relations. L and M में दो रिलेशंस आगे हैं। कई बार क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द जनरेटर्स whose direction cosines are given by the relations 3l plus m plus 5n equals to 0 and 6mz minus 2nl plus 5
not z, it is mn. Okay, here it is z. So and 6 mn minus 2 mn plus 5 ln equals to 0. ध्यान रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1 इफ इट इज देन डायरेक्शन कोसाइंस अदरवाइज डायरेक्शन रेशियोज होंगे. बी केयरफुल. ओके, सो फॉर सम वैल्यू ऑफ k this will be on plane as a response. We found these two relations. इन दो रिलेशन से एल एम एन के दो सेट्स आएंगे. वो दोनों सेट्स जब मैं एक सेट काम करूंगा तो इसकी इक्वेशन आएगी, दूसरे सेट की जो वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशंस आएगी, दोनों जनरेटर्स की इक्वेशंस आएगी. उसके बाद इन दोनों के बीच का जो एंगल कैलकुलेट करना है, वी अप्लाई द फॉर्मूला cos थीटा समथिंग. कई बार इक्वेशंस नहीं पूछते और जब भी एंगल कैलकुलेट करना होता है हमें इक्वेशंस की जरूरत नहीं रहती है, हमें केवल एल एम एन की वैल्यू से मतलब होता है. सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस वन. अगेन आई रिपीट, find the angle between the generators in which the plane cuts the cone. Sometimes equations of the generators will be asked. So this is homogeneous equation. Remember, this is homogeneous, but it is degree 1. This is degree 2. Remember, this is the equation of the cone. This is the equation of the plane. Vertex is 0, 0, 0. So any line passing through 0, 0 is written like this. Any point then satisfied by this. We found these two relations. Now we simplify this too. Okay, let's see. किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या मिलता है. ओके, this is equation number 1 and this is equation number 2. On eliminating n on first and second loops, n का विलोपन करने पर, so it is 3l. सेकेंड से ले रहा हूं मैं, n का विलोपन किया है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज 6m minus 2l. 6m minus 2l multiplied by n, और n की वैल्यू को मैं यहां से पिकअप करूंगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? दिस इज minus 3l plus m upon, लिखते समय मिस्टेक नहीं हो. हाँ, इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसपोज किया, नेगेटिव हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू जो है मेरे पास में वो n का, दिस इज द वैल्यू ऑफ n. n यहाँ से 6m minus 2 times of l plus 5l. Let us simplify this. So it is 5 into 5 is 25. 25l. Then it is minus 6m minus 2l multiplied by 3l plus m equals to 0. Yes, it is correct. 25l minus 6 3 is 18. So it is 18lm. Write it here. 6 3 is 18. So it is minus 18l. Then it is minus 6m square. Okay. Then minus into minus plus 3 to the 6l square. Then minus, then it is plus 2lm. This is equal to 0. Check the calculation. This is 25l, then minus 6m minus 2l into 3l plus m equals to 0. So the multiplication is 6 3 is 18
minus, then 6m square, negative sign, then this minus and this minus will be plus, so it is 3 to the 6m square, then again it is plus 2m. This is 6m square. Here it is 5 into 7 to 9 ln minus 6 m square equals to 0 implies 2l square plus 3l minus 2 m square equals to 0. This is quadratic equation. Let us simplify this factorization. Here it is possible. 2l square plus 4l minus 11 minus 2l square equals to 0. 2l is common, so it is l plus m minus m is common, so it is I made a mistake. देखो वापस चेक करो. Yes. 2l. Okay. 2l is common, so it is l plus 2l minus m. So l plus 2m equals to 0. This is l plus 2m. 2l minus m equals to 0. So this implies l plus 2m equals to 0 or 2l minus m. This is number 3. 4. This is third question. So we found l plus 2m equals to 0 and 2l minus m equals to 0. Two relations, linear relations. So we solve first with third one set and we solve first and fourth another set. Okay. Remember, I have eliminated n. It is not necessary. आप m को भी एलिमिनेट कर सकते हो, l को भी एलिमिनेट कर सकते हो. It depends on you. Part A. From first and third. Okay. First is 3l plus m plus 5m equals to 0, and third is l plus 2m plus 0 into m equals to 0. Write in this format. Then use cross multiplication. This is l upon m upon n upon. ध्यान रखना 3 वेरिएबल्स हैं l and n और हमारे पास में 2 ही इक्वेशंस है, 2 ही रिलेशंस है, इसलिए हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा l के लिए इन दोनों जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पर 1 है, 1 into 0 is 0 minus 5 into this it is 10. ये आपको आता है, आपको ध्यान है. देन फॉर m l और n के लिए 5. कई लोग यहाँ पर माइनस साइन लिखते हैं, लेकिन मैं माइनस नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा ऑर्डर में देता हूँ. m कैलकुलेट करना मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ इसके लिए. So it is 5 into 1. This is 5 minus 3 into 0. और n के लिए this is 3 into 6 minus 1. So this is minus 10, 5. This is 5. L upon minus 2, 1. It is this one. Okay. Second one, from first and fourth. So first is 3l plus m plus 5, and the fourth is 2l minus m plus 0 into l. So it is l upon m upon n upon, so it is 1 into 0, 0,
minus, then 5 into minus 1, and this minus is plus 5. 5 to the 10, 5 into 2, 10, minus 3 into 0. Then 3 into minus 1, so it is minus 3, and it is minus 2. So we found one, two, and minus 1. L and N आपको याद होना चाहिए. If L, M, N are direction cosines, remember direction cosines, then these are the direction ratios. ये दिक् अनुपात होंगे. इसलिए जो एलिमेंट थे जो हमने अभी काम में लिया सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजेनियस के लिए जो उसको सेटिस्फाई करता है वो डायरेक्शन कोसाइंस L, M, N, ये डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे 1, 2, -1. So therefore cos theta, theta is the angle between this, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root of A1 square plus B1 square plus C1 square root A2 square plus B2 square plus C2 square modulus. New one acute angle के लिए, then it is A1 A2, this means -2 into 1, that is -2, 1 into 2, that is 2, then 1 into -1 is -1 upon under root 4 plus 1 plus 1 root 1 plus 4 plus 1. I hope so. Yes. This and this cancelled out. So this is a 1. 4 plus 1, 5 plus 1, 6. So it is root 6 into root 6 is 6. So this is 1 by 6. Therefore, theta equals cos inverse 1 by 6. So what is the angle between these two lines, these two generators? Cos inverse 1 upon 6. Okay. And equation of generators? Because these are the direction ratios, so you can write the equation of generators. Equations of lines. यहाँ पर ये जो lines बनी हैं वो कौन है? Generators. So x upon -2, y upon 1, m upon 1, and x upon 1, y upon 2, and z upon -1. So this is the way to find the angle between lines of intersection in which the plane cuts the cone. जब कोई समतल किसी शंकु को काटता है तो 5 चीजें मिल सकती है: पेयर ऑफ लाइन्स, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला. पेयर ऑफ लाइन्स सरल रेखा युग्म 2 लाइन्स कब मिलेगी? जब वो प्लेन जो है वो इसके शीर्ष से इस तरह से गुजरता है, उससे पास होता है, तो जो 2 लाइन बनती है वो उन दोनों की हमने इक्वेशंस लिखी है. और उन दोनों लाइन्स के बीच का जो एंगल था दैट इज थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 1/6. तो कई बार जनरेटर्स की या लाइन्स की इक्वेशंस पूछी जाती है, कई बार सीधा एंगल. So okay, so this is the way to find the angle between 2 lines of intersection in which the plane cuts the cone. So I hope you have understood the particular part, and you try one more question. This I'll give you in the homework. So find the equation to the lines. Find the equation to the lines in which the plane 2x
plus y plus z equals to 0, 2x plus y minus z. 2x plus y minus z equals to 0. Cuts the cone. 4x square minus y square plus 3z square equals to 0. Also find the angle between them. Okay, so this is the homework. So you try this question and write the answer in your comment box, so I will verify your answer is correct or not. So be safe, मास्क लगाइए, डिस्टेंस बनाए रखिए. आज इतना बहुत है. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.